Students, you are most welcome in Nissan Classes Private Limited Kota YouTube channel. In previous lecture, you learned about the chemical reactions, chemical changes, characteristics of chemical reactions. Okay. Today we will learn about the chemical equation and जनरली जो केमिकल रिएक्शंस है अगर हम उनको लिखें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि बहुत ज़्यादा लेंदी होती है. सो ड्यू टू दिस वी राइट डाउन दीज केमिकल reactions into the shorts. So there are two methods or two way. First is the word equation and second is the chemical equation. So we take the first example. In previous lecture, the magnesium ribbon is burned in oxygen and is produced the white color substance that is called magnesium oxide. So इस पूरे सेंटेंस को अगर हम लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा. So due to this we have to write down in the words. So first magnesium, second oxygen, and third is the magnesium oxide. So if we write the chemical reaction into words, it is called word equation. Now second method, chemical equation. In this method we write the chemical reaction in the form of symbols and formulas. So if we want write down the above reaction, magnesium it means Mg, oxygen O2, magnesium oxide MgO. So that is the chemical equation. So this is the best method because we can write the chemical reaction into briefly, it means short. So there are some rules to write down the chemical reaction equations. Okay, so there are only three rules. They are very simple. The first rule, the symbols and formula of the reactants are written on left hand side, it means LHS, with plus sign between them. These rules also same for word equation and chemical equation. So according to first rule, जो भी आपके reactants हैं उनके symbols को और formula को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे. अगर ये आपके मोर देन वन है तो फिर प्लस का साइन लगा के लिखेंगे. नाउ सेकंड, द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन RHS साइड, इट मीन्स राइट हैंड साइड्स with plus sign between them. So like reactants, the products are also write down from the right hand sides. Okay, now third, an arrow sign is put between the reactants and the products. दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं और आपके रिएक्टेंट है उनके बिटवीन आपको एक एरो का साइन लगाना है. बट द पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड द प्रोडक्ट्स, यानी इस एरो का जो आपका साइन है उसका पॉइंट किस साइड होगा, रिएक्टेंट से लेके आपके प्रोडक्ट की तरफ. इट मीन्स लुक इन दिस. तो दीज आर द रिएक्टेंट एंड एरो साइन बिटवीन दिस, लाइक दिस. अगर आप इसको उल्टा लगा देते हो तो इन दिस कंडीशन ये आपका रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएंगे, जो रॉन्ग होगा. ओके, सो एरो का साइन आपको इस तरह से लगाना है कि इसका पॉइंटेड आपका रिएक्टेंट टू products. Now look the examples. Sodium plus water, these are the reactant. They react each other and form the sodium hydroxide and hydrogen gas. So there are two reactant and two products. In first example, two reactant, one products. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिएक्टेंट सिंगल हो, प्रोडक्ट आपके मोर देन वन हो. सो next, calcium carbonate, when we heat it we obtain calcium oxide and carbon dioxide gas. Okay, so in this way we can write the chemical equation. I repeat, the reactants are write down left hand side with plus sign, products are write down right hand side with plus sign, and between them you have to put a arrow. Okay, thank you.